ऐसे कई चेहरे हैं जो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं पर डरते हैं सरकार से, उसी सरकार से जिसको उन्होंने खुद चुना है। क्या ये एक अच्छे लोकतांत्रिक देश की निशानी है? ये है हमारा भारत। ये सिर्फ एक देश नहीं, ये एक संस्कृति है। इसकी 5000 साल पुरानी संस्कृति ने हमें विभिन्न अज्ञात लोगों को अपनाना सिखाया। ये देश जमीन का एक टुकड़ा ही नहीं, नदियों का एक संगम ही नहीं, बल्कि ये देश 125 करोड़ लोगों की ताकत है। इससे कितने भारतीयों के दिल में कहने को तो बहुत कुछ है। तो आइए सुनते हैं आज उनके मन की बात। I am very proud of its diversity, which is a real point. Really, there is unity in diversity. Now, negative points are there in each and every country. It thrives there. But all the people are living in India. Ask them, aren't they happy in India? Obviously, they will feel that they are very much happy. So now, if we go to the economical aspects, there also exists some problem in the economical point of view. If we see in the economical point of view, so inflation and price rise has added to it. Mahangai, which we say in Hindi. So it's a great problem now which India is facing. But can we do anything to that? So I don't think that we can do anything to that in this society where corruption is still existing. Corruption is a problem which cannot be eliminated. I think it's a social problem. देखिए, आज भारत में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सभी लोग चिंतित हैं और ऐसा लगता है कि हमारा देश दुनिया के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में से एक हो गया है। परंतु ये हमारे दृष्टिकोण का अंतर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बताता है कि हमारे देश में अब जागरूकता और पारदर्शिता दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसलिए जनता उन सभी चेहरों को बेनकाब कर देना चाहती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को चाहिए, हर एक भारतवासी को चाहिए कि वो अपने हर काम को देश की कसौटी पर परख कर देखे कि वो काम हमारे देश के लिए कितना उपयोगी है या अनुपयोगी है। हमें व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम देश से हैं और हम सबसे ही देश नेता वो है જ્યારે પબ્લિક જે લોકોને શાસન સોંપ્યું છે એ પદ વાયાની હોય ગમે તે પદ એ લોકોએ નાનામાં નાની પ્રજાને પણ શાંતિથી રહી શકે ને મળે એમનું રક્ષણ થાય, એમને મોંઘવારીથી બચે એવું આયોજન કરવું જોઈએ। બસ આપણને એટલી તમન્ના છે કે દેશને એવા નેતાઓ મળે કે જે નાનામાં નાની પબ્લિકની સાથે ઉભા રહે અને વાત કરી। બસ આપણને અમારા દાખલા તરીકે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। Our most valuable and inscripted materials in the human history of men are treasured up in India only. A drive through every curve and bound of the nation reveals the amount of dreams woven by an Indian every single day. A dream to earn the next meal of the day. A dream to win a job. A dream to be happy. A dream to survive despite all odds. That's the vital force that drives India. Rahul Gandhi has said politics is everywhere. It's in your shirts, it's in your pants, it's in our education, it's in every system. I don't need to define it. I want to give something back to my nation rather than joining the foreign brain brigade. It's already being clear that the chapter which had a Western beginning will have to have an Indian ending if it's not to end in the destruction of human race. At this supremely dangerous moment of human history, the only way of protection of mankind is the purely Indian way. Jai Hind. We are proud that we are Indians. India એક એવી કન્ટ્રી છે કે જેની અંદર તમામ જ્ઞાતિના લોકો શાંતિથી રહી શકે। ઇન્ડિયા એક એવી કન્ટ્રી છે કે જેની અંદર વર્લ્ડની સૌથી મોટી ડેમોક્રેસી હશે અને ઇટ ઇઝ અ સક્સેસફુલ કન્ટ્રી। ડેમોક્રેસી હોવા છતાંય સક્સેસફુલ કન્ટ્રી છે। એઝ અ પબ્લિક આપણે ઇન્ડિયાને જે ચાઇના જોડે જે સરખામણી કરીએ છીએ, જે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ, ચાઇના કોઈ ડેમોક્રેસી કન્ટ્રી નથી। Corruption is today's India is a very big problem. Corruption is today in every part of India and in every department. You cannot see a department without corruption. ઇન્ડિયામાં જે બ્લેક મની જે બહાર લોકોએ સ્વિસ બેંકમાં ડિપોઝિટ કર્યા છે એને ટોટલ 100% રિટર્ન લાવી દે તો ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી 4 ગણી ડેવલપ થઈ જશે। ઇન્ડિયા હું વિચારું તેમ એક ભ્રષ્ટાચાર દેશ છે કે જેમાં ભ્રષ્ટાચારીઓ ઊંચા આવતા જાય છે દડે અને જે પ્રામાણિક લોકો છે એ નીચલા વર્ગમાં જતા જાય છે। આપણું પોલીસ તંત્ર
ભ્રષ્ટાચારમાં છે. નવી જે શિક્ષણ પ્રણાલી શરૂ થયેલી છે એમાં છેલ્લી ઘડીએ અત્યારે પરીક્ષાનો સમય બહુ નજીક છે અને આ ગવર્મેન્ટે ડિક્લેર કરેલું છે. જો વર્ષની શરૂઆતમાં જ આ કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ, શૈક્ષણિક સ્ટાફ બધા જ એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓને ગાઈડલાઈન આપે અને જેને લઈને એ વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે માનસિક જે ત્રાસ પડી રહ્યો છે એનાથી એ મુક્ત થઈ શકે. टूरिज्म डेवलप करने के लिए यहाँ तो अपना प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को, पब्लिसिटी या टूरिज्म के लिए एडवर्टाइज वगैरह कुछ करना चाहिए, और अपना जो सर्विस टैक्स वगैरह है थोड़ा कम करे तो भी कॉस्ट कम थोड़ा नीचे ला सकते हैं. India is a country which is governed by a system called government. सिटीजन भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन आजादी के 63 साल बाद भी लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, पर ये जरूर पता है कि सचिन ने दौरा शतक मारा कब था. हमने ऐसे ही कुछ सवाल इन्हें भी पूछे, तो आइए देखते हैं इनके जवाब क्या है. સ્ટેટ્સ 29 આપણા દેશમાં રાજ્યો આઈ થિંક 43 કેવા 28 આઈ इंडिया how? એ બધું ના પૂછે યાર મહેરબાની. India has so many states. કારો ટપ ના પૂછે યાર મગજ ખરાબ ના કરી શકે. 19 રાજ્ય. I am speechless. वंदे मातरम. गण गण मन. સારે જવા સે અચ્છા હિન્દુસ્તાનમાં. Our national song is Vande Mataram. આ ઉંમર આવા પ્રશ્ન પૂછે જણ ગણમાં. नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम. कुछ नहीं हो सकता इस देश का. कभी नहीं बोलेंगे हम. पता नहीं कितनी बार सुना है, कितनी जुबानों से सुना है, कितनी जुबानों में सुना है, और सच भी है. इतने सालों में कुछ नहीं बदला. बस सरकार पर सरकार बदली. रास्ते का कचरा वही का वही. क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का. देश में कितने ही ऐसे शहर और गांव हैं जहां पॉल्यूशन से कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का. कहीं सरकार चलाने वाले मंत्रियों पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो कहीं कानून चलाने वाली पुलिस घूस ले रही है और हम चुपचाप हैं. क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का. रोज अखबारों में पढ़ते हैं अनगिनत खबरें, बूढ़ों पे, औरतों पे, बच्चों पे होते अत्याचार के बारे में, और 1 घंटे में सब भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ नहीं हो सकता इस देश का. स्पोर्ट्स स्टार हो या फिल्म स्टार, हम उनमें जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं, पर भेदभाव के उकसाने पे, धर्म के नाम पे हजारों जाने ले लेने को तैयार हो जाते हैं. क्यों? क्यों आतंकवादी आके हमारी आंखों के सामने हमारे शहर पर हमला करते हैं और हम सिर्फ सैकड़ों की तादाद में मोमबत्तियां जलाते हैं. क्यों? 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 क्योंकि और कुछ नहीं हो सकता इस देश का. और कुछ नहीं हो सकता. सच कहा, कुछ नहीं हो सकता. क्या वाकई कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है. आपका शायद ये सारी समस्या का हल नहीं है, पर शुरुआत तो है. शुरुआत जो आपके हाथ में है.